Good morning to all of you. Very good morning and welcome. So today we will discuss about coral reef. We have in the last session we are supposed to do something on coral as well as in North America. Today we'll do first coral reef. We'll complete that. Then the topics like current, tides, whatever is there, as well as in North America. Some mapping on North America also will do. So friends, first let us look at now coral reef. Coral reef. What are those? If you look at our Lakshadweep or Maldives, you'll find out the tiny, very small islands are there. And do you know that these islands are made up of the exoskeletal materials of some of the sea organisms? So coral reef are exoskeletal deposits of coral polyps, dead coral polyps, exoskeletal deposits of dead coral polyps, okay, generally found in the tropical oceans. These are also found in temperate region also, but there is an evidences of climate change in that particular area. Exoskeletal. I said coral polyp. I use the terms here. Coral polyps. Coral polyps are very tiny sea animal. Anemone बोलते हैं उसको जिसको. Tiny, very small sea animal. They grow with zooxanthellae. Again, I am saying coral polyp grows with the zooxanthellae and algae. Okay, coral polyp. These are coral polyps are what? Tiny sea animal. Anemone बोलते हैं इसको, tiny sea animal. Zooxanthellae are algae. Generally, the coral polyp grow with the zooxanthellae with symbiotic relationship, with symbiotic association. Symbiotic association. I mean, जब कोरल पॉलिप बढ़ता है कहीं पे तो उसके साथ साथ जूएंथेल्स भी बढ़ते हैं. जूएंथेल्स जो बढ़ेगा तो ये फैसिलिटेट करता है कोरल पॉलिप का भी ग्रोथ को. दोनों इनफैक्ट साइमल्टेनियसली दे ग्रो. दिस टू coral polyp grows with the zooxanthellae with symbiotic relationship. Okay, it has symbiotic association, symbiotic relationship. You remember, I said they are found in the which region? They are generally found in tropical area. So these coral polyp while they dies out, they form the coral reef. I said generally हम यूज करते हैं टर्म कोरल रीफ सभी को, बट कोरल polyp और कोरल रीफ differences is there. Let me now move on to the next year, like what are the conditions for the development of coral reef? Conditions for the development of coral reef. First condition is, and the foremost one, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ के लिए, ट्रॉपिकल
water bodies, that is temperature. Temperature should be 19 to 27 degrees Celsius nearly. Temperature should be 19 degrees Celsius to 27 degrees Celsius is more favorable for it. 19 to 27 degrees Celsius is more favorable. Second one is salinity. Salinity of that region, the ocean water salinity should not cross 40, like mostly between 27 to 30 parts. 27 parts per thousand to 30 parts per thousand is more suitable. If you will have more, like up to 40 is okay. 27 up to 40 parts is okay. Beyond this it will dies out. मैक्सिमम अप टू 40 पार्ट्स पर थाउजेंड. सैलिनिटी जो है ना थोड़ा सा मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा होगा तभी खराब होता है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट हियर अबाउट दिस टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कोरल कैनॉट लीव. अनदर वन, इफ यू लुक एट if it is much below the sea level also, it cannot be. Third point is depth or presence of a platform, with 45 to 80 meter depth. (45) से ऊपर भी ज्यादा नहीं होता है जनरली, एंड 45 to photic zone is there, 80 meter depth. It's very suitable for this depth of the, okay. Some of the persons like Gilshorf, Hoffman, कुछ साइंटिस्ट है, they said even 10-15 meter height डेप्थ में भी होते हैं. प्रॉपर सनलाइट इज नीडेड. प्लेटफॉर्म where sunlight is properly available. Availability of sunlight should be better. Sunlight should be available here. ठीक है, एक चीज तो है, sunlight should be available. Another one, proper oxygenation is needed. Oxygen, and there should not be any turbidity. Okay, so please note down. Proper oxygen is available in प्रॉपर अवेलेबल. ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर परेशानी होता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ देयर इज नो प्रॉपर ऑक्सीजन. आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन कहाँ पे नहीं है क्या? देयर आर केसेस सम पोल्यूटेड एरियाज आल्सो देयर where biological oxygen demand is more, there also परेशानी होगा. यूट्रिफिकेशन ऑफ द लेक है, कहीं पे नहीं होगा वहां पे. ओके, so presence of another very important things, there should be absence of muddy water. ओके, और क्लेई वाटर, मतलब क्ले और सस्पेंडेड पार्टिकल्स,
सेडिमेंट्स एसेट्रा, सेडिमेंट्स और ये सब नहीं होंगे यहाँ पे. देयर शुड बी absence of sediments, suspended particles, muddy water, etc. Okay, this is here. So clear water is very important. The presence of absence of muddy water, you have the clear water. That is presence of clear water. Okay, in that case only we will have this. These are the 5th point here. Sixth point is sixth point on this. Wind should blow in that region, not very strong wind. Okay. Okay. Flow of air. Essential, but it should not be very strong. फ्लो ऑफ एयर क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि न्यूट्रिएंट को वहां से आने देगा, न्यूट्रिएंट्स जो है ना, न्यूट्रिएंट्स को आने देता है. फ्लो ऑफ एयर इज इंपॉर्टेंट, बट इट शुड नॉट बी वेरी स्ट्रांग इन दैट रीजन. में तो वाटर भी थोड़ा सा है. absence of strong ocean current, absence of very strong ocean current. Strong ocean current should be absent in that case. Very important. Absence of strong ocean current. Okay. Salinity is there like this, as I told you. Fresh water, ocean current of the wave, you know, there should not be much strong wave. Absence of very strong ocean current, etc. And free from, this should be free from marine pollution, and adverse human interference, adverse human interference. Adverse human interferences. It should be absent from the human interferences. Adverse human interference. Like, you know, mining, you have like overfishing, all should not be there. These things really hinders the development of coral reef. So these are the things here. Under this particular condition, coral reef develops. There are different types of coral reef develops. There are different theories on, there are different theories on the development of coral reefs. Coral reefs. There are various theories on the development of the coral reef. There are various theories like, you know, the Darwin's subsidence theory of Charles Darwin. Charles Darwin has a theory of subsidence theory. A very important, you know, theory, as you know. First, subsidence theory of Darwin and Dana. Subsidence theory of Darwin and Dana. Darwin, Dana and Davis करो, तीन लोगों का है. Darwin, Dana and Davis. 3D है.
subsidence theory. That we'll have a discussion on that one also. हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में. There are also non-subsidence standstill theory, non-subsidence glacial control theory. Okay, standstill theory of Murray. Murray की standstill theory है. Murray standstill theory you have. Okay, we have theory glacial control theory also there. Glacial control theory of Delhi. DALY. Glacial control theory of Delhi. RA Delhi. RA Delhi. Glacial control. These three theories are there. Out of these, you know, this is very, very, in fact, important and regarded one. This is subsidence theory. Charles Darwin, D.R. Dana, and Davis. So these three people are there. Sir, what does water mix between two oceans? Yes or no? Does water mix between two oceans? Yes. If yes, then what are the after result, and if not, then why? See, here is a question you have asked, like, you know, does water mix between two oceans? Definitely it will mix, but there is density differences, so color will be different. Mix होते हैं, मगर कलर अलग अलग रहेंगे वहां पे. Okay, color will be different. Very interesting here. Color will be different, and there are a lot of other things also. Okay, color will be different in that case. So gradually color change होता है. If you go to Arctic, and ये temperature और salinity दोनों के ऊपर depend करता है color of the ocean and all. Okay. If yes, then what are the resultant? If not, then why? Result क्या होगा? Gradual, you know, as you know, mixing of the water leads to change in the color gradually. So in the, for example, from polar water, this side, we have seen these things in many oceans. You have बहुत सारे Pacific और Atlantic जहाँ मिलते हैं, दोनों का density अलग अलग है. You will have this Arctic and the Atlantic, or Arctic and the Pacific where they are meeting. There is clear cut two different color you will have. Gradually will change, and because of this, you know, the type of aquatic animal or the plant जो है ना वो अलग अलग होंगे. And there is a transitional zone like. Now what is the underground ocean? Underground ocean, ये जो होता है ना, आप usually we call like in the polar area or cold area, we have like 4 degree temperature. मैंने कहा वहाँ liquid form है, ऊपर जो है ना ice है. This is also sometimes, you know, glacial geomorphologists, they talk this underground ocean also. This is a cause. Okay, let me now move on to again this one. I said subsidence theory of Darwin, Dana, Davis, standstill theory of Murray, and the glacial control theory of R.A. Delhi. These are the important theory. हमें ये theory detail में जाने का जरूरत नहीं है. हमें एक बहुत ही important aspect एक है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका. ये जो आपकी थ्योरी से रिलेटेड है, एप्लीकेशन से रिलेटेड है. दैट इज लाइक, यू नो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रीफ. वो इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ कोरल रीफ? टाइप्स ऑफ कोरल रीफ. While I'll go for the types of coral reef, let me tell you their gradual evolutional pattern also. Gradual evolutional pattern में क्या होता है? If I'll talk about gradual evolutional pattern, gradually कैसे evolution होता है, अगर हम देखेंगे इसको regarding this particular point, if we'll talk about the gradual evolutional pattern, I am saying. So क्या होगा यहाँ पे evolution में? In this case, 3 different types of coral reef will be there.
पहले क्या होता है ये according to the theory of Darwin also it is there, like you have coral reef will turn in a sequential form, like this is fringing reef, then you have the barrier reef, then you have the atoll. So fringing reef to barrier reef to the atoll. जब एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट होता है तो फ्रिंजिंग रिफ बनेंगे पहले, फ्रिंजिंग रिफ टू द बैरियर रिफ एंड बैरियर रिफ टू द एटल. Gradually they usually grow and they fully develop coral reef or it means atoll. Now okay, regarding the condition, another related question I got yesterday. You told that in western coast fishing done more than western coast we will have marine pollution, but pollution is related only in the coastal margin. Okay, but Lakshadweep is in western coast. Why? Lakshadweep not in the western coast, away from the west coast in the Arabian Sea. First you must see that in the atlas. This is the recent phenomena. Millions of years earlier, all these corals are developed in these regions. If two different ocean current is mix each other, then it will be favorable condition for development of coral reef. See, it depends where it is. In the temperate region, if warm current is mixing there, maybe we can have this favorable condition. But remember, wherever there is dynamism, much dynamism of the water, you will not have the coral reef. How and why? Let us see now one more point here. क्या है हम देखते हैं यहाँ पे और देखते हैं ये types of coral reef पे we'll see. See here. Let us say water level is up to this now. अभी ये वाटर लेवल है यहाँ पे. ओके, उसके बाद I am saying this is L1, this is L2, matlab this is L3. I am saying these three because let us say the sea level gradually increased here. In the beginning the sea level is up to this. यहाँ तक sea level है beginning में, up to here the sea level is here up to this. Okay. Sea level is up to this in the beginning. Sea level यहाँ तक है ये. Because of that, we have the development of different coral polyp here.
Subsequently, development of the coral polyp. This is at the fringe of this known as fringing reef. अगर एक conducive environment होता है, coral reef will develop here gradually. At the fringe of this coral reef, इसका नाम क्या हो गया? Fringing reef. Then subsequently this fringing reef, ये जो fringing reef बना यहाँ पे, ये fringing reef है, ये fringing reef पहले बनी है. This fringing reef will now grow upward. यहाँ तक होगा ये. It will grow upward like this. यहाँ तक हो जाएंगे. Here it will grow up to here. Gradually it will grow up to here. Okay. Forming a water body at its, यहाँ पे एक water body बना. This is, here it is called as, ये जो है इसको बोलेंगे क्या? This is called as here barrier to the coast, so it is known as the barrier reef. क्या नाम इसका नाम? Barrier reef. Here also it is the barrier reef. Okay, it is the barrier reef. This is a bay or lagoon. Bay or a lagoon. Here is the bay or a lagoon. यहाँ पे एक bay or a lagoon बन गया. With this, okay, this is a different one. Now ये फेर बढ़ता जाएगा. Because of this, there is again rise in this, and it will have like finally this type of one coral reef का develop करेगा, because the water level increased here, because of which up to here it is development is there. This is a lake or a lagoon, and this side you have the very well known atoll. Atoll are the mostly matured the coral reef here. ये atoll बन जाएंगे. ये पानी में पूरी तरह से डूब जाएगा. ये regions पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है. पूरी completely it will get submerged under this, and here you have this type of what you call, finally you will get this. This is called as what? Atoll. देखा आपने? Sequentially it develops, I said. Sequentially it develops. Gradually or sequentially it develops. क्लियर है क्या? Is it clear to all of you? यहां तक क्लियर है सभी को? Please draw this diagram. If you are not getting, let me know.
Again I am saying, if proper environmental conditions, suitable condition is there, fringing reef develop, fringing reef now grow towards the ocean here, and finally forming a lagoon or bay here. Then you have fully developed lake or a lagoon develop here in these regions. And देखिए आप यहाँ पे क्या होता है, again you can see, this is a lake or lagoon you are having. Lake or a lagoon it is here. Okay, यहाँ पे lake or a lagoon हुआ, देखिए आप, and सर्कुलर शेप कोरल रीफ इज देयर. ऊपर से अगर देखेंगे तो सर्कुलर शेप होगा. यू सी दैट दिस इज द प्लेटफॉर्म इफ इट इज हियर, चारों तरफ होगा ना, ये अगर माउंटेन है चारों तरफ होगा ये, ऑल साइड्स. सो फ्रॉम अबव इफ यू सी रिंग शेप में होगा कि नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज एन एटल हियर. दिस इज द एटल, ये तो एटल है, एटल. और एटल इज अ फुल्ली डेवलप्ड कोरल रीफ है ये एटल. Fully developed coral reef is atoll. Fringing reef, barrier reef and atoll. How sequentially they develop, I have given an example here. See, among these, पहला क्या है? First one is the fringing reef. You remember one thing, in case of the fringing reef, अगर हम देखेंगे तो fringing reef में क्या है? In case of the fringing reef, fringe में at the coast you have, remember the coral reef of Gulf of Mannar. Note down here, coral reef of Gulf of Mannar is a good example of fringing reef. Gulf of Mannar coral reef, fringing reef. इसको यहाँ पे fringing reef में आ जाएगा, fringing reef. Okay, example, note down here, coral reef of Gulf of Mannar. Florida regions, here let me note it down. Gulf of Mannar in India, Madagascar island regions of Africa, Madagascar regions of Africa. We have also the सोसाइटी ग्रुप ऑफ आइलैंड इन, आप बहुत सारे है ये, लाइक यू नो, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, इन इंडोनेशिया यू हैव माडागास्कर, गल्फ ऑफ मन्नार. वो हैव इन इंडिया, पाक बे में है, पाक बे इन इंडिया ऑल्सो हैव दिस. अब आपको देखिए नेक्स्ट वन, बैरियर रीफ. एग्जाम्पल ऑफ बैरियर रीफ पहला देते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. एंड सेकंड इज गल्फ ऑफ मन्नार इन इंडिया. नाउ एटल में बेस्ट एग्जाम्पल, एटल में, atoll you have example of atoll here. atoll पे बेस्ट एग्जाम्पल होगा योर इन atoll लक्षद्वीप, मालदीव्स, फूना फूटी atoll of South Pacific island
Good example here. Funafuti et al. South Asia, USA की है. You can see that these are very important. ठीक है. Funafuti et al. These are the best example of the atolls. As I said, different Funafuti atoll. Here you have the best example, Funafuti atoll. Okay. Funafuti atoll is considered to be the best example of atoll in the world. South Pacific islands जो हैं वो सब है. These are very good example of this. Okay. There are, as I said, different theories on this also there and all. What is the significance of the? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ये सब का ऐसे स्टीप स्लोप है टुवर्ड्स द आउटर ओशियन. देखो ओशियन से दूर स्टीप स्लोप है एंड इनसाइड द कॉन्टिनेंट के तरफ जो है जेंटल स्लोप. क्यों है ये? Why there is a difference in the slope of this coral polyps, coral reef, okay, towards open ocean it is steeper. Why it is? Why it is steeper towards the deep ocean? बताइए. Can anyone tell me? Anyone? Yes? Tell me please. Anyone? अरे एक भी आंसर नहीं दिया भाई, आप लोग आंसर नहीं देते हो. Steep due to running of ocean water. अच्छा, are you sure? आप पढ़ के आया कि नहीं? चैप्टर नंबर 33 बोला था मैं. Is the rise of sea level causing the rise of coral reef or is it other way out? See, according to the subsidence theory, rise of the coral reef leads to rise of the sea level leads to rise in the coral reef. Okay. Steep due to running of ocean, no. Due to water, no. Steep due to running of ocean, no. Slope side water is stagnant. So what? Because stagnant कैसे होगा? Water नहीं होता है stagnant कभी भी यहाँ. Because they need sunlight. Oh, very good. Who said this? Thank you very much. Because they need more sunlight and more oxygen as well as more nutrient. They'll get it from open sea. It is enoughly, plentifully available. So growth is more. So देखो, which is not available in the deep sea. Yes, of course. Layer formation for nutrition and yes, absolutely correct. What happened when the coral polyp developed? Coral polyp बहुत ज़्यादा growth होता है. Once it grows in millions and billions. Once it grow, density ज़्यादा होगा. Density ज़्यादा होगा तो क्या होगा? It will goes down and down and down. When it goes down, what happened? Because of suffocation, it dies out. ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सफोकेशन में डाई आउट होगा. तो मरने से पहले तो कोरल रीफ, तो सिंकिंग कोरल रीफ, इट वोमिट व्हाट? इट रिलीज लाइम. इट इज ए लाइम सिक्रेटरी ऑर्गेनिज्म. लाइम जो है ना, स्टिकी मटेरियल, वो ऊपर वो वोमिट किया और रिलीज किया, व्हिच गॉट फिक्स्ड अप विद द अपर कोरल पोलिप. इसके साथ मिल गया. व्हाइल इट विल ड्राउन, द अपर कोरल पोलिप्स आल्सो गेट ड्रैग्ड. देन ये सफोकेशन से मर जाएगा. It will also release the same things. Like in a chain, like they will develop and they goes down and down and it touches the floor also. कहीं पे अगर ऐसे ग्रो होता है ना, अगर ये पहले ऐसे ग्रो किया, ये ग्रो करके ऐसे नीचे सिंक, इसलिए टच करता है नीचे भी. And gradually they advance, they grow up and up. This is the case, the coral polyps, they are in a sequential, they form and they are in this way. कोरल पोलिप, कोरल रीफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ कोरल रीफ फॉर अस? व्हाट इज द
significance of coral reef for us. क्या सिग्निफिकेंस है इसका? पहला इंपॉर्टेंस है, इट इज ए कार्बन सिंक, it acts as a carbon sink, then it purifies water and also sediments, attracts sediments, water and develops clear water. एसिडिक है तो अल्कालाइन कर देगा, अल्कालाइन वाटर इज गुड फॉर अस. अच्छा, ये जो रीजन्स है, ओके, इट प्यूरिफाइज वाटर एंड डेवलप्स क्लियर वाटर. मैंने कहा ये जो है, दिस इज द रिच बायोडाइवर्सिटी, ग्रेटेस्ट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, called as rainforest of the ocean. Rainforest of the ocean. Rainforest of the ocean. They are called the rainforest. Like the way the rainforest give us so much of benefit, likewise it also gives us benefit. So called as the rainforest of the ocean. Again I am saying, it is also called as the rainforest of the ocean. Rainforest of the ocean. Greatest ecological significance, called as the rainforest of the ocean, rich in biodiversity. It purifies water and develops clear water. I said another very important thing, it is a hiding place for camouflaged marine animals. यानी कि camouflaged, colorful, camouflaged, कलरफुल जो है ना, कैमोफ्लेज, जो जैसे कलर है नेचर का, ऐसे कलर बनाएंगे आपने आपको. हाइडिंग प्लेस फॉर द कैमोफ्लेज मेरीन एनिमल. देखो आप, ऐसे होता है ये द कोरल. हियर यू सी दिस कोरल पॉलिप, हाउ इट लुक्स लाइक कोरल. ये जो है ना, देखो जैसे कलरफुल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इट बिकेम वेरी कलरफुल ड्यू टू द ज़ूएंथाइल्स. मैंने कहा ज़ूएंथाइल्स algae है, तो प्लांट किंगडम से, ये एनिमल किंगडम से है, एंड बोथ लाइक द कलरफुल, द कॉम्बिनेशन दे गिव्स वेरी कलरफुल. देखो ये कैमोफ्लेज, ये फिश देखो, उसका कलर देखो, ये सबका, वो सब वहां पे छुप जाएंगे, पता नहीं चलता है. सो दिस हियर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. रिच बायोडाइवर्सिटी हियर, very rich biodiversity because of what? Again, as you know, it is at the coast. These regions we have like lot of animal camouflage. They can come and they can hide here. Okay, fish, rich biodiversity here. Purify the water. मैंने कहा oxygenated है. So for the fish and all these also it is good. Marine animal के लिए भी अच्छा होता है. Dissolved oxygen जो है ना वहाँ पे ज़्यादा रहता है. This is the cause where it is. And coral reef, that's why if you look at the benefit of this one on oxygen particle, purification of water and oxygenation of the water, in which it plays a very important role. So carbon sink, man carbon को ये absorb कर लेता है, carbon sink है. So thereby it protect our environment. It is for environmental stability and environmental betterment. It's very good, very very important. In fact, बहुत ही important है ये, इसीलिए. ठीक है. So this is you must remember this about the coral reef. So
there is a, like, gradual discoloration of the coral reef and death of the coral reef known as coral bleaching. Coral bleaching. Coral bleaching is the gradual discoloration of the coral polyps and its death is called as coral bleaching. Gradual discoloration of the coral polyps and its weak health, death होता है बाद में, because of the weak health it dies out. These coral polyps, these are zooxanthellae get dissociated. Okay, when coral reef gets stressed, कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है कि कोरल ड्यू टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस द कोरल polyp gets dissociated with the coral polyp gets dissociated from the zooxanthellae. So it became pale or white in color. Okay, so stress, एनवायरमेंटल स्ट्रेस से ही होता है, व्हाइट कलर हो जाते हैं थोड़ा सा, इसका जो सेल्फ इम्यूनिटी पावर घट जाता है, आई मीन द सेल्फ रिप्लेनिशिंग कैपेसिटी ऑफ द कोरल पॉलिप ग्रेजुअली डिक्रीज. ओके, सो homeostatic balance and immunity of coral polyp gradually decreases. ओके, ठीक है. कॉजेस ऑफ कोरल ब्लीचिंग. कॉजेस क्या है? फर्स्ट इज environmental stress, like increase in temperature, increase or decrease in temperature, change in salinity, change in salinity of water, change in its salinity, sedimentation, change in salinity, sedimentation, environmental stress, increase or decrease in temperature, change in salinity, sedimentation, और क्या क्या है? You have pollution, overfishing, acidification of water, ocean water acidification,
acidification of the ocean water और द सी वाटर एसिडिफिकेशन जो है ये है ओशियन और सी वाटर एसिडिफिकेशन. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. और क्या हो सकता है? टेल मी व्हाट एल्स. Anything else? नो क्वेश्चन फ्रॉम यू, नथिंग है ना, कोई बात नहीं. ओशन वाटर कल पढ़ाई क्या होगा ना आप लोगों ने, बहुत पढ़ाई क्या होगा, बहुत सारे मटेरियल दिए हम लोग. क्लाइमेट चेंज दिया है, कोरल माइनिंग है, माइनिंग ऑफ सी बेड. एंड अनदर वन जो आपको इस पे लिखा नहीं शायद हो, दिस इज द 8th वन इज डिजीज. डिजीज लाइक येलो बैंड डिजीज, ब्लैक बैंड डिजीज, coral plague. These are the disease here. 3 types of disease very dominant. These are the cause you are having different types of, disease to have here. Right. This is something about the coral reef. I hope you will able to write. If you needed anything, if you will have, hopefully you will able to write this. Right. Okay. Now I will move on for the next, the dynamic ocean. Is it clear to all of you? कोरल रीफ के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा कर लेंगे आप, नो प्रॉब्लम टू यू. आई होप यू विल एबल टू डू दिस. देन आई विल मूव ऑन टू द डायनेमिक ओशियन. विल गो फॉर द डायनेमिक ओशियन नाउ. देयर आर 3 important thing about the dynamic ocean. Sea wave, tide and the ocean current, है ना. Let us see now the dynamic ocean. So the ocean water is not static, it is dynamic. There are 3 different cases here, like there is development of wave, there are tide, and also there is ocean current. 3 things. Ocean currents. Okay, 3 things usually develops. What are these wave? Wave are generally this is wind generated oscillatory movement of the sea water. Wind generated oscillatory movement of the sea water is called as sea wave. Sea wave, oscillatory movement of water. In fact, not generally it is the wind generated, but some source of energy it can be by any energy. If it is tidal wave भी कहते हैं, क्यों? Because here energy source is what? Your gravitational pull, है ना, gravitational attraction. So due to any external energy, if there is oscillatory movement of the sea water, it is called as wave. Okay, this is not very important for us, but you must remember is sea wave. ये हो गया आप wave. In wave, this particular point in a wave we have, this is wave height,
and this is the wavelength. I hope you know about this. This is called as the crest and this is the trough. Wavelength between two, you know about these things. Crest, दो crest के बीच distance wavelength है. When the distance or the wavelength decreases, wave height will increase. होगा कि नहीं? So this is here wavelength, trough and crest. You have crest and trough. Okay. Now wave stiffness is wavelength by wavelength. Wavelength by wave height है, wave height wavelength. Wave stiffness, we can say that stiffness of a wave. Wave stiffness is equal to wave stiffness कितना होगा? Wave height by wavelength. Wave height by wavelength है कि नहीं? Wave height by wavelength. Wave stiffness होगा. So whenever wave height and wavelength, they are like wavelength will increase, wave height will increase, wavelength will decrease. Disproportionate है इन दोनों, है ना? I hope you. Wave velocity equal to wave length by time करेंगे. So आपका सुनामी पढ़ना है, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है wave and all. You must remember this. Sea waves are of different types. Okay. Distortion. Wind wave are there, tidal wave are there. Wave can be tidal wave where the gravitational attraction of sun and moon is the major cause of the wave here. Okay, that is the, what is that? In case of that, we have the periodic rise and fall in the sea level you will have, है ना? That is known as the tidal wave. Okay. So let us look at about the tide. इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, only tide में भी थोड़ा सा पीटी के लिए. In the mains we have only ocean current is very important. Okay. Tide, periodic rise and fall in the sea level due to the periodic rise and fall in the sea level due to the gravitational attraction of the sun, moon and the earth. Sun, moon and the earth is called as this. I hope it is clear to all of you. Gravitational attraction of sun, moon and the earth is called as tide. I hope you got it. Gravitational attraction of sun, moon and the earth. It's called tide. You got it? What tide is? Gravitational attraction of the sun, moon and the earth is called tide. Right? What a tide I said. Just I have given what is tide. So tide is a special type of wave. It is a tidal wave. Tide is a type of wave, isn't it? Let us in detail tide I will discuss. Tide के ऊपर डिटेल में डिस्कस करूँगा. In detail we will have a discussion, but again after the break I will discuss the tide. Now I will discuss the ocean current. इतना ही मीनिंग ही बता रहा हूँ अभी फिलहाल. There are certain things we need to look at. ये इतना हो गया. आपको याद है the position of the sun, moon and the earth? Do you remember first or second class in which I said? So during the break I would like to see
एंड ऑल ऑफ यू मस्ट रिवाइज दैट। ब्रेक के टाइम पे मैं चाहता हूँ सभी सन, मून और अर्थ की पोजीशन और उसका फेजेस के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, सो दैट आई विल डिस्कस विथ पॉजिटिव फैक्टर कैसे होते हैं कहाँ पे। ओके, टाइड के ऊपर डिस्कस करेंगे उसके बाद, ब्रेक के बाद। बट लेट अस लुक एट नाउ ओशियन करंट। ओशियन करंट regarding wave, I don't have to discuss anything. Regarding ocean current and tide, we will discuss in detail. So let us see what are these ocean current. लिखें इसके ऊपर। अच्छा, if you have seen any of the movie where water in the ocean is moving in a specific direction, like the movie of Life of Pi or somewhere, you know, अगर देखा है आपने, कभी कभी क्या होता है, ओशियन का पानी जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहता है। बहता क्या है, दैट इज लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द wind, or there is differences in the density of the water, the flow of water takes place in a specific direction, or displacement of water I can say. So please note down here what is ocean current. Ocean current is large scale displacement of sea water in a defined direction, is called as ocean current. Okay, narrow and fast moving ocean currents are called as stream. एग्जाम्पल दे दो, गल्फ स्ट्रीम। नैरो एंड फास्ट मूविंग ओशियन करंट आर कॉल्ड ए स्ट्रीम। ओके, मैंने कहा गल्फ स्ट्रीम एग्जाम्पल। फास्ट मूविंग, सॉरी, स्लो मूविंग huge body of sea water or ocean current which changes its direction gradually is called as drift. एग्जाम्पल है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। Please note down this point. Or west wind drift. North Atlantic drift and west wind drift, these two are here. North Atlantic drift and west wind drift, these two are present here. Got it? Yes. Slow moving huge body of water, sea water or ocean current which changes its direction gradually is called as the drift. Example is North Atlantic drift, West wind drift. ठीक है, ये सब चीजें आपको शायद समझ में आ गया. Is it clear to all of you?
आप एक काम करिए अभी प्लीज, इफ यू हैव द एटलस विथ यू एंड आई थिंक दैट यू मस्ट हैव दैट, रखा है कि नहीं एटलस? इन योर एटलस देयर इज ए मैप ऑन ओशियन करंट ऑफ द वर्ल्ड, लास्ट पेजेस के तरफ होगा ओशियन करेंट्स. कैन यू सी दैट? लेट्स हैव a glance over this. Okay, so ये तीन है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशियन करंट. टाइप्स ऑफ ओशियन करंट करते हैं. टाइप्स ऑफ ओशियन करंट. Ocean current are of different type. Let me tell you what are the most important ocean current. Based on depth, based on temperature, volume of water and speed, we have different types. ये ocean current based on depth, based on temperature, based on this, like there are different types here. मैंने कहा ओशियन करंट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. बेस्ड ऑन डेप्थ, based on depth, it can be surface current, deep sea current. Surface current, or it can be deep sea current. It can be surface current or it can be the deep sea current, isn't it? It can be the surface current or deep sea current. Based on this, it can be deep sea current or surface current. So I said there are different way of classifying this ocean current. This ocean current of two types on the basis of depth. They are deep current and they are depth के basis पे, deep current and surface current on the basis of temperature. Warm current and cold current based on temperature. Based on volume of water, its speed and direction. Based on volume of water and its speed and direction. Volume water, its speed and direction. Based on volume of water, its speed and direction, we have three types. मैंने पहले भी बोला था ये. Drift, current and what is that? Stream. So there are different types of ocean current मैंने कहा. Let me explain it in detail about all this. सभी को मैं explain करके दिखाते हैं. So different type of ocean current जो है ना, ocean current are of different types. कितने types का आपको देख लिया अभी? Types of ocean current you have seen. Ocean current can be on the basis of depth, surface or the deep sea current.
temperature, warm current, cold current. Generally the surface current are of warm and cold. Volume over drift, current and stream. मैंने अभी इसको डिफाइन किया था. वाटर ड्रिफ्ट आई टोल्ड यू, आई ऑलरेडी सेड वाटर ड्रिफ्ट, वाटर करंट है ना, एंड वाटर स्ट्रीम. विथ एग्जाम्पल्स वी हैव डन. ये सब आप एग्जाम्पल के साथ कराए हुए हैं, राइट. नाउ विल सी इन डिटेल व्हाट आर कोल्ड. योर फर्स्ट इज सरफेस करंट एंड डीप सी करंट. देखिए आप कैसा हो इस पे. लुक एट हियर, लेट अस से here is a ocean, right? ये एक ओशियन है. There are two things here. Water is constantly flowing in a specific direction. Water flow is always there in a specific direction. Sometimes what happens, because of different environmental conditions, the water may get uplifted somewhere and upwelling may take place. आप देखिए इन दोनों जगह को. इन दिस केस यू विल फाइंड आउट, ये रीजन को देखिए और ये रीजन को देखिए. दिस इज द जोन ऑफ अपवेलिंग, है ना. दिस इज द अपवेलिंग जोन. अपवेलिंग जोन क्योंकि पानी ऊपर आ रहा है नीचे से. It is a zone of upwelling. This is downwelling zone. Zone of downwelling. यहाँ पानी नीचे जा रहा है. Here the water is going up. Here the water is going up. Here the water is going down. So ये हो गया आपका zone of upwelling. Here you have zone of downwelling. Remember. And ये रीजन जो है जहां पे देख रहे हैं आप ओशियन करंट, दिस इज द रीजन्स वेयर यू हैव ओशियन करंट. दिस इज द डीप सी करंट. Deep sea current. Deep sea current in the upper part. Deep sea current. On the contrary, in the upper part you have the ocean current here, and this ocean current is called as what? Surface current. This is the surface current. You got it what I am saying? In an ocean there is upwelling and downwelling. Somewhere the water is going up, somewhere down, because of different environmental and regional factors you have. Lot of regional factors are responsible for this. I hope you got it. Okay, clear है? Surface current, downwelling, here is a deep sea current, upwelling, and this is current. Please, क्यों होता है ये? There are lot of factors here. Why downwelling in one part, upwelling in other part?
दिस इज यू सी दैट वाटर का धर्म क्या है, व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम. सो इफ ड्यू टू एनी कॉजेस, मैकेनिकल कॉज हो, रीजनल कॉज हो और कोई भी कॉज हो, यहाँ से अगर पानी का लेवल ऊपर उठ गया, अपवेलिंग हुआ, तो यहाँ पे डाउनवेलिंग पक्का है. इफ अपवेलिंग इन वन पार्ट, डाउनवेलिंग इन द अदर पार्ट, डेफिनेटली. व्हाई डाउनवेलिंग इन द अदर पार्ट्स, क्यों होगा डाउनवेलिंग यहाँ पे? डाउनवेलिंग इज देयर इन द अदर सीन्स बिकॉज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम. आप देखा होगा समुद्र, ये रिवर में और कोई कैनाल में जब पानी जाता है, कुछ जगह पे वंडर जैसे ऐसे घूमता है पानी, एंड गोज पानी, वाटर गोज डाउन. नियर बाय रीजन्स देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अगेन वाटर कमिंग फ्रॉम बिलो टू अप. कहीं पे अगर नीचे पानी जा रहा है, उसी के कुछ डिस्टेंस दूर ही होगा, पानी नीचे से ऊपर आते हैं. समवेयर इफ इट इज वाटर इज गोइंग डाउन, to compensate this, to maintain equilibrium, nearby there is again upward movement of the water. Where the water is going down, forming a whirlpool like, this is called as downwelling zone. And to maintain equilibrium of this one, some other part you will have like, and again the water will come up. This is called as the upwelling zone. Always you will have this. If there is a downwelling, there must be same reciprocate होगा क्या है upwelling में. Downwelling and upwelling are continuous processes. It will continue. If downwelling is there, definitely there will be upwelling also. Okay. Upwelling और downwelling जो है completely, always it will be there. Upwelling, downwelling are completely correlated things. Both. ये दोनों को दोनों correlated हैं. Upwelling और downwelling. Upwelling है तो downwelling पक्का होगा. I hope you got it now. In this way, देयर इज लाइक if the water is coming from below, मैंने बताया था पहले, पानी जो है ना नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, तो अपवेलिंग से यहाँ पे कोल्ड वाटर विल कम आउट, हियर वार्म वाटर विल गोज डाउन. इट कैन बी ड्यू टू बिकॉज ऑफ एनी कॉज. लेट अस से यहाँ पे एक हाई प्रेशर कंडीशन है, प्रेशर पानी नीचे जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन है, पानी ऊपर आ जाएगा, ये हो सकता है. हाई प्रेशर है तो ज्यादा प्रेशर होगा तो नीचे सिंक कर जाएगा, वाटर लेवल गोज डाउन. लो प्रेशर तो ऊपर उठ जाएगा. तो दैट इज द we can have circulation also. Or let us say you have more saline water, it will sink down, or more denser water, it will sink out, less denser water will come up. So there is always a turbulence, and there is always in fact the circulation of the water inside the ocean. This is here is called upwelling and downwelling. Is it clear for this? Okay. Wave और current में difference है. In case of wave, मैंने कहा अप एंड डाउन ऑसिलेटरी मूवमेंट. करंट में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इन ए डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो और डेंसिटी ग्रेडियंट इज देयर. सो रिमेंबर, वेव इज ओनली confined to the surface, upper surface, but your ocean current is related with both upper surface and deeper inside also. Okay, there are lot of differences between them. Okay, lot of difference between them. दोनों में बहुत differences है. ओशियन करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है देखते हैं. प्लीज नोट डाउन, व्हाट आर द कॉजेस और फैक्टर्स फॉर द ओरिजिन ऑफ दिस ओशियन करंट. ओशियन करंट फैक्टर्स, कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ओशियन करंट. ओके, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ओशियन करंट? फैक्टर्स और causes for the origin or development of, what is for origin or development of ocean current. Development of ocean current क्या क्या है इसके ऊपर? First and most important one, what are the causes for the origin or development of the ocean current? First and most important things, the factors related to the earth's rotation. Factors related to the earth's rotation. Earth's rotation. क्या फैक्टर है रिलेटेड टू अर्थ रोटेशन? ग्रेविटेशनल
Earth rotation, gravitational force and force of deflection will have this. One is gravitational force, and deflection force. ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिफ्लेक्शन फोर्स, दो फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या है, ये ग्रेविटी की वजह से ही तो है, जो आपका ये जो ऊपर नीचे नीचे आ रहा है यही है ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ वेट यू हैव गोइंग डाउन, डेंसर वन इज गोइंग डाउन, वर्टिकल वाटर जो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ओके, and deflection force, like you have like what you call the most important one, Coriolis effect। डायरेक्शन का चेंज जो होता है Coriolis effect है। डिफ्लेक्शन फोर्स में एग्जांपल दे दो, Coriolis effect। Coriolis effect की वजह से जो पानी सीधे जाना था वो साइट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, देखिए आप हाउ इट इज। इफ दिस इज द अर्थ हियर, this is the equator here, the wind will blow, let us talk about warm ocean current, ये warm current है, warm current will blow like this, okay, warm current will blow in this way only। क्यों? This is warm current from the low latitude towards the higher latitude it blows। अरे वार्म करंट का मतलब वार्म वाटर का फ्लो होगा। सो वार्म वाटर का फ्लो लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे, बट फ्रॉम द हाई लैटिट्यूड क्या आएगा यहां से, कोल्ड वाटर, दिस इज कोल्ड करंट, ऑलवेज इज कोल्ड करंट, फ्रॉम द हाई लैटिट्यूड टुवर्ड्स द लो लैटिट्यूड कोल्ड करंट आएंगे। रिमेंबर, आपको याद है दैट बिकॉज ऑफ कोरियलिस फोर्स के वजह से wind blows from in northern hemisphere, it turn towards right, in southern hemisphere wind turn towards left due to Coriolis effect। याद है ना आपको, Coriolis effect याद है। सो ये देखो राइट की तरफ जा रही है कि नहीं पूरे, एंड फाइनली दे आर फॉर्मिंग ए जार। क्या फॉर्मेशन है, जार। कंप्लीटली वन सर्कुलर मूवमेंट इज देयर व्हिच इज क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and anti-clockwise in southern hemisphere। This is because of what? Earth's Coriolis effect। Coriolis effect की वजह से ये पहला एक सबसे बड़ा फैक्टर है ये कि this is being getting difference, there is a change in the direction। Here is a question I am getting that बहुत सारे लोग, in this surface current deep sea current diagram what are the side walls, two different continents or it can be anything, any another things, these are side walls। तो क्या होगा, these are continent, दो ओशियन की बाउंड्री जो होगा कॉन्टिनेंट होंगे। ओके फाइन, डन।
इज इट ओके? ये समझ में आया क्या? सो जो पॉइंट हमने आपको बताया अभी, डिफ्लेक्शन फोर्स यही है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये है, ये ग्रेविटी के वजह से, एंड ये जो है आपका कोरियलिस फोर्स के वजह से। आई होप इट इज क्लियर। सो फर्स्ट पॉइंट, फैक्टर रिलेटेड टू द अर्थ रोटेशन इज देयर, फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर, नाउ विल गो फॉर दिस। सेकेंड फैक्टर क्या है देखते हैं, व्हाट इज द सेकेंड फैक्टर? Second factor on this is factors originating outside the sea. Factors originating outside the sea. Like first we can say in the first outside में क्या हो जाएगा? Atmospheric pressure, wind, precipitation, evaporation, atmospheric, wind, precipitation, evaporation, आप देखो एटमॉस्फेरिक विंड, प्रिसिपिटेशन, एवापोरेशन, आपका यहाँ इंसोलेशन, ये सब कॉज है। आप देखो एटमॉस्फेरिक विंड, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, याद है आपको ये सब? These three wind play a very very important role. Atmospheric wind, they plays a very dominant role in the ocean. Someone is saying, sir, does the ocean, that surface current, deep sea current has opposite direction? Yes, why not? देखा ना आपने, it is there. Okay. Why did Gulf Stream change North Atlantic drift? देखा, impact of Coriolis force, westerly wind will be there. वेस्टर्लीज विंड, लैटिट्यूड देखो, उस लैटिट्यूड में क्या है? वेस्टर्लीज विंड है, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्लीज विंड, राइट? दिस इज द मेजर कॉज हियर। वेस्टर्लीज विंड इज द मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। I hope you got it now. It is there. So atmospheric wind, easterly wind, westerly wind, polar easterly, तीनों इंपॉर्टेंट है। कैसे होते हैं उस पर देखते हैं। अच्छा, बाकी में देखो, इसको मैं डिटेल में जाऊंगा अभी। प्रिसिपिटेशन से क्या होगा? मोर रेनफॉल इफ इट इज देयर, सैलिनिटी विल डिफर। अगर सैलिनिटी डिफर होगा, एवापोरेशन ज्यादा है, सैलिनिटी विल बी मोर, इंसुलेशन ज्यादा है, मोर एवापोरेशन, मोर सैलिनिटी। प्रिसिपिटेशन अगर ज्यादा है, सो मोर लेस सैलिनिटी। यू गॉट इट? फ्रेश वाटर एडिशन होगा ना, तो सैलिनिटी डिपेंड किसके ऊपर करेगा? फिर सैलिनिटी विल बी, इट विल इंपैक्ट व्हाट? सैलिनिटी इंपैक्ट द डेंसिटी। डेंसिटी अगर इफ ज्यादा एवापोरेशन है, मोर एवापोरेशन, मोर डेंसर वाटर, इट विल सिंक डाउन। मोर टेम्परेचर, मोर एवापोरेशन विल सिंक डाउन। मोर इंसोलेशन, मोर एवापोरेशन, इट विल सिंक डाउन। सो हाई टेम्परेचर को डिपेंड करेगा ये। आई होप इट इज क्लियर। प्रिसिपिटेशन, टेम्परेचर, इंसुलेशन तीनों रिलेटेड है। आई होप यू गॉट इट। मिक्सिंग ऑफ मोर फ्रेश वाटर हियर, low salinity, it will be like this different one. I hope you got it. So this particular factor, I hope you got it now, all of you. Factors में precipitation, evaporation, insulation, ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। एटमॉस्फेरिक विंड का बात करते हैं। देखिए हाउ इट इज, हाउ द एटमॉस्फेरिक विंड इज इन्फ्लुएंसिंग। लुक एट हियर, इफ
This is low pressure condition. You remember the pressure belt? Yes. Hope all of you are remembering that pressure belt and wind system. ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, you know it. And these are low pressure, low pressure. You know these things. Now, I hope we are well aware about ये wind क्या है? ये क्या है? पोलर ईस्टर्लीज, याद है ना आपको? पोलर ईस्टर्लीज, ये भी क्या है? पोलर ईस्टर्लीज. ये क्या है? दिस इज ईस्टर्लीज, दिस इज ईस्टर्लीज, एंड दिस विंड हियर इज वेस्टर्लीज. यहां पे हो जाएगा वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज will blow like this. Westerlies will blow in this way. You remember this? अगर ये ऐसा है यहां पे, because of this cause, because the warm wind यहाँ पे ये जाती है, तो we have एक completely यहाँ पे एक wind एक बहती है. ये कौन सा? ये ocean current. Because of the impact of the easterlies, we have. Because of the impact of the easterlies, because of the impact of the easterlies, we have a current here known as north equatorial current. This is south equatorial current. You got it? North equatorial current and south equatorial current, they develop due to the easterlies. नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट ईस्टर्लीज की वजह से बनते हैं. नाउ व्हाट हैपेंड हियर? दिस टू आर नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट, आई सेड, एंड द विंड विल ब्लो इन दिस वे. सो वी हैव दिस टू करंट. नाउ लेट अस से one continent is located in between. Let us say one continent is located here. One continent is located here. One continent is located here. Okay. Let us say this is a continent. It is a continent here. Okay. ये continent है. Now what will happen? This will, from here it will divert like this. यहाँ पे continent है तो ये ऐसे जाएगी. Yes or no? So this is here is getting diverted because of a continent here, presence of the continent. Let us say continent यहाँ पे है. अगर एक continent यहाँ पे आ गया, in between अगर कोई continent यहाँ पे आ जाते हैं, अगर एक कॉन्टिनेंट है, then it will move towards north.
it will move towards south here. So this leads to warm current here towards the polar region. Warm current will go from the equator to the polar region. जाएगा कि नहीं? In this way, the current will develop gradually. इसी हिसाब से आपका ये जो करंट जो है ना, धीरे धीरे करके ये डिफरेंट टाइप ऑफ करंट विल हैव लाइक करंट का डेवलपमेंट होगा ऐसे. वार्म और कोल्ड करंट based on, I said first is easterlies or the easterlies wind, then they are getting blocked by the continent and they are getting diverted here, forming this type of ocean current, north or south equatorial current बन गया. You remember one thing, this particular current is, जैसे मैंने पहले आपको ये बताया था, आप देखो ना ऐसे आया कि नहीं अभी. Now don't you think like this, it is formed here. Now यहां से इधर क्यों आएगा? ये वेस्टर्लीज विंड से प्रभावित हो रहा है. यहां पे ईस्टर्लीज विंड से आ रहे हैं. गॉट इट? ये ईस्टर्लीज से हो रहा है, ये वेस्टर्लीज विंड से हो रहा है. ये सर नो, ये आपको ये ईस्टर्लीज से हो रहे हैं, यहां से ये जो आ रहे हैं वेस्टर्लीज से आ रहे हैं. सो इन दिस वे द कंप्लीट सर्कुलेशन इज बिकॉज ऑफ द इवन द प्लानेटरी विंड सिस्टम. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इन वन पार्ट मे लीड्स टू movement towards the other part and subsequently a complete cycle will develop here. You got it, I hope now. Now in this case you see, यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए आप ऐसे गया, ये पानी इधर से ये ड्रॉ कर रहा है. Now it means the almost warm all warm oceanic current जो है ना, जितने भी warm oceanic current they are derived from these two, north or south equatorial current. Another point you see here, there is one more current. देखिए आप, मैंने जैसे कहा आपको कि नॉर्थ इक्वेटोरियल है, साउथ इक्वेटोरियल है, फाइन. इक्वेटोरियल रीजन, यू गॉट द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फाइन. ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, दिस इज साउथ इक्वेटोरियल करंट इज देयर. नाउ इन बिटवीन दिस टू a counter current will develop known as the counter equatorial current. इन दोनों का बीच में करंट डेवलप करता है जिसको बोलते हैं क्या? काउंटर इक्वेटोरियल करंट. नॉर्थ साउथर्न काउंटर इक्वेटोरियल, देख रहे हैं आप, काउंटर इक्वेटोरियल करंट डेवलप between two warm current. This is north equatorial current and south equatorial current. दोनों के बीच में काउंटर इक्वेटोरियल करंट डेवलप करता है. What is the cause of development of this counter equatorial current? Do you know? ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट डेवलप क्यों करता है? दो फैक्टर है इस पे. पहला, आप एक काम करो ना, यू टेक 2 स्टिक्स और एक पानी कहीं पे है, पानी कोई तालाब में हो या कहीं पॉन्ड में या बाथिंग टब में, यू जस्ट ड्रैग इट. वाटर विल गो इन दिस वे बोथ in one direction here, but at the middle point the water will flow in the opposite direction. Compensatory force will have to maintain equilibrium. Compensatory force to maintain equilibrium. Another thing is there, earth is round, you know, and earth is in a dynamic position, west to east move कर रहा है. Okay, with this it is coming in this way दोनों के तरफ, and you know that at the equatorial region bulging of water is there. क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अर्थ का, इट ट्राई टू थ्रो आउट एवरीथिंग. बल्जिंग तो होगा, लाइट है, लो प्रेशर भी है, थोड़ा सा बल्ज करेगा, and this water will flow in this direction because of this. So earth rotation also is a major cause for the development of this particular force. So दो चीज है, earth rotation centrifugal force and earth rotation bulging of the water, as well as second मैंने कहा the to maintain equilibrium compensatory force will be there, and all these leads to
the development of counter equatorial current, and this counter equatorial current is also a what type of current? Warm current. Counter equatorial current is also a warm current. Okay, counter equatorial current is also a warm current. Clear है? Counter equatorial current is a warm current. So 3 warm current है, north, south and counter equatorial current. Almost all other warm current are modification of north, south or counter equatorial current. North, south or the counter equatorial current. दुनिया में जितने भी ओशियन करंट है सभी कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन है नॉर्थ, साउथ और द काउंटर इक्वेटोरियल करंट. दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ north, south or counter equatorial current. I hope you got it. So you got it that atmospheric pressure plays an important role, wind plays an important role. Atmospheric wind, atmospheric pressure, precipitation, evaporation, insolation. एक चीज और भी है atmospheric, E is atmospheric pressure. Atmospheric pressure भी होगा. How atmospheric pressure? मैंने कहा somewhere you have a high pressure, somewhere you have a high pressure. High pressure है तो क्या होगा? पानी का बदलाव, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, वजन ज्यादा है, and the low pressure is there. So high pressure area water will sink, low pressure area water will go up. So there is vertical downward movement or upward movement of the water here. So it is called as either upwelling or downwelling. Here is a question, please repeat how earth rotation leads to the counter equatorial current. There are two forces I said. When there is displacement of water, we will have like compensatory force. Second is because of earth rotation at the equatorial region, as you know, bulging is there. That is known as, what is that? Centrifugal force. Earth rotation से पानी को बाहर जैसे कि जा रहा है. तो at that like there is a force as you know which is like gravitational force है, compensate कर रहा है. मगर थोड़ा सा पानी का लेवल जो है ना यहाँ पे लो प्रेशर भी है ये रोटेशन के वजह से. सो व्हाट इज देयर लाइक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, बिकॉज ऑफ दिस वाटर लेवल थोड़ा हाई है वहां पे. सो व्हेन द कंपनसेटरी फोर्स इज देयर, द वाटर लेवल फ्रॉम दिस इट विल गेट ड्रैग्ड, नो डाउट. अर्थ इज मूविंग वेस्ट टू ईस्ट. सो ये जो है ना पानी ऐसे कंपनसेटरी करने के टाइम पे विद दिस द वाटर विल गेट ड्रैग्ड इन दिस वे. पानी जो है ना इजीली, क्योंकि ये आपको पता है काम एंड क्वाइट एरिया है. कौन सा? एट द इक्वेटोरियल रीजन देयर इज काम एंड क्वाइट कंडीशन. काम एंड क्वाइट कंडीशन मतलब डोल्ड्रम है. यू रिमेंबर दैट दिस इज ए डोल्ड्रम एरिया. सो डोल्ड्रम एरिया इज काम एंड क्वाइट. दैट इज द कॉज मेजर फैक्टर फॉर दिस इजी डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ. यही मेजर कॉज है कि ये रोटेशन लीड्स टू द काउंटर इक्वेटोरियल करंट. Okay, earth rotation, it helps, not exactly double, it is catalyzing, acting as a catalyzing factor. Catalyst जैसा काम करता है. चलिए ठीक है. atmospheric pressure also an important factor here. I hope you got it now. North south counter equatorial current, you got it. A very important point I would like to say here. आपके जो तीनों factor, two sets of factor I said, two sets of, third sets of factor is, पहला सेट क्या था? व्हाट वी सेड? फर्स्ट सेट ऑफ फैक्टर इज फैक्टर रिलेटेड टू द अर्थ रोटेशन. ओके. सेकेंड सेट्स ऑफ फैक्टर इज फैक्टर ओरिजिनेट्स आउटसाइड द सी. ओके. नाउ थर्ड सेट्स ऑफ फैक्टर, तीसरा सेट जो फैक्टर का है. So we can write down here about these third sets of factor. Factors originated within the sea. Factors originated within the sea. Within the sea. Factors originated within the sea. ओशियन के अंदर जो फैक्टर ओरिजिनेटेड है, फॉर एन एग्जाम्पल सी की जो है वी हैव प्रेशर ग्रेडियंट है, टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, मेल्टिंग ऑफ आइस है. वी हैव लाइक
thermal gradient over the ocean, density gradient over the ocean. In the ocean temperature gradient हो सकता है, density gradient हो सकते हैं, और salinity gradient है, melting of ice हो सकता है, melting of ice you have over this in thermal gradient, density gradient, melting of ice. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इफ थर्मल ग्रेडियंट इज मोर, हीट एक्सचेंज चलेगा उससे. डेंसिटी ग्रेडियंट इज देयर, मैंने कहा था मोर एवापोरेशन लीड्स टू मोर डेंसिटी. मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था. आई होप यू गॉट इट, दैट पर्टिकुलर थिंग यू मस्ट हैव गॉट दिस. ओके, व्हाट एल्स, और क्या हो सकता है? व्हाट एल्स, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? Factors originated within the sea, these are. ये तीन, they are responsible, no doubt. Melting of ice होगा तो क्या होगा? Density will be different. Melting of ice होगा तो क्या होगा? Definitely the density of the water will be less. Temperature कम हो जा सकता है. Melting of density of gradient अलग हो जाएगा, है ना? So vertical rise or fall in the water we have, upwelling or downwelling will be there. Another point, factors which modify the ocean current. Fourth factor, factors modifying the ocean currents. Factors modifying the ocean currents. बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो ओशन करंट को मॉडिफाई करते हैं. Like you have, like, you know, the shape of the coast, coast का shape modify the things, depth of the ocean, bottom topography, seasonal variation of temperature and pressure. Okay, bottom topography, that is depth, of the ocean, shape of the coast, straight slope है, curved slope है, they will just catalyze जैसा ना, they will modify the ocean current. उसका जो velocity है उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं. कहीं पे large scale movement of the, see the huge water body आ रहा है, huge scale water एक drift आ रहा है, सडनली ओशन का डेप्थ घट रहा है, पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो पाइलिंग अप पे ऊपर उठ जाएगा. इट विल पाइल अप एंड इट विल गो अप. ये हो सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स समटाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम इवन. सो व्हाट आई एम सेइंग इज ऑल दीज फैक्टर्स दे आर रेस्पॉन्सिबल, दे आर कॉजेटिव फैक्टर. प्रिवेलिंग विंड, टेम्परेचर ग्रेडियंट, एवापोरेशन, शेप ऑफ द कोस्ट, है ना, चेंज इन द सीजन, रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, दिस लीड्स टू अर्थ रोटेशन, लीड्स टू व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल, अर्थ रोटेशन लीड्स टू योर व्हाट यू कॉल कोरिलिस इफेक्ट. कोरिलिस इफेक्ट इज इन्फ्लुएंसिंग द पैटर्न ऑल्सो. सो ये सब है आपका ओशन करंट की सर्कुलेशन से रिलेटेड. आई होप यू गॉट सम आइडिया. डज एडिंग फ्रेश वाटर टू सी वाटर, डज एडिंग फ्रेश वाटर टू द सी वाटर बी वन ऑफ द फैक्टर? डेफिनेटली ये कैटलाइजिंग फैक्टर होगा, ये मॉडिफाइंग फैक्टर होगा. फ्रेश वाटर टू सी वाटर मॉडिफाइंग फैक्टर में होते हैं, बिकॉज सैलिनिटी विल बी चेंज देयर. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स. I will have a break now. After the break we will discuss
द ग्लोबल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन करंट। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये ब्रेक टाइम पे यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू हैव योर एटलास विथ यू। आपके सामने एटलास होना चाहिए। इन द एटलास, इफ यू डोंट हैव द एटलास, प्लीज लुक एट GC Leung book where you have page number 89, I think, where you have the ocean current, or in the NCERT book where you have in the ocean current distribution, और भी है हमारा this KSG booklet। KSG booklet में भी कहीं पे होगा जरूर ocean current are there। Yes, it is given ocean current page number 401, 402, 403 it is given। ठीक है, ocean current। So we can see map सामने में होना चाहिए and try to draw a map of the world। मैं वर्ल्ड मैप ड्रॉ करके मेरे साथ साथ आप बनाएंगे all the oceanic current। concentrate on your lecture today because once you will get this, believe me, forever सभी दिन के लिए अच्छा रहेगा। My request to all of you, this is a very very important topic, ocean current। Do concentrate on your studies and do this, okay? So we will discuss। मैं चाहता हूं कि आपको ये पूरा क्लैरिटी आए। कोई प्रॉब्लम हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू आस्क मी इन द ग्रुप, नो प्रॉब्लम फॉर मी। आप पूछिए, आई विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स, बट यू शुड एबल टू टीच योर फ्रेंड इवन। आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप खुद तो ठीक है लिख भी पाए आंसर बढ़िया, कोई भी क्वेश्चन आए प्रीलिम हो, मेंस में और एनी एग्जाम, you should able to do perform well, and this is what I want, and you can teach your friend even। this should be, इतना confidence होना चाहिए। do study, see the map, will prepare the map। इसके बाद हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन का है impact of the ocean current on the climate, impact of the ocean current on the fishing, navigation, okay, बहुत सारी चीज़ें, will not leave anything, will do in detail। my request to all of you, do concentrate। याद रखें एक बात, यहाँ पे you should not feel any disturbances, distraction from your studies। do concentrate your book, your atlas, your material and your coach। thank you very much, see you after the break।